Hello, good evening, friends. So, I'm basically taking some more advanced level of formulas. Today I'm going to take a category of nested if and conditional ifs. If and ifs, ऐसे दो formulas होते हैं. If is a very basic formula, but then there is a nested if that you can use, and there are IFS, which is called the conditional if formulas. So let me just basically start up with the basic of if. So if you understand basic of if, then I'll go on. So let us say there are two numbers and you just want to find out which of those two number is bigger, or if a particular number is bigger than that. Let's say यहाँ पे number A है. It's a very basic thing. Number A is, let's say, 300. Number B is 500, and I want to find out whether number A is bigger or not. So, bigger number. Which one is a bigger number? Number A is bigger or number B is bigger? Basic explanation of if, and then you can go on adding, because what I want to explain is something different. So if is just one condition. When you are using one if, it is just one condition that you are trying to apply. Logical test. What is the test that I am trying to apply? Which of the two is greater than? You can type up anything. Is this number greater than this? These are called, greater than is basically operator. Now, what was my formula? Is B1, if B1 is greater than B2, if it is true, what is the value if true? Now what you want to type thereafter should be always in the inverted commas. So what do you want to type? Number A is bigger, right? If it is false, what is the value if it is false? I will type what? Number B is bigger. Do you understand that? As simple as that. Now what should be the answer here? Number B is bigger should be the answer. aa gaya? So you can just play with this particular data, like school 515, obviously need to change ho gaya. So this is a single if, but the best part of the Excel is it allows to put as many ifs as you want. So if there are multiple conditions that you want to apply, now I have not taken a data, you can apply if this is greater than this, for example. Now instead of saying value of true, if it is true and you want to apply another if, you can apply another if. If this is like, for example, there is a slab rate of system of taxation. Can you tell me the slab rates? So slab, what is the first slab? 0 to what? 0 to 2 lakh. Then what is the rate of tax? 0%. Okay. Then 2 lakh 50,000 1 to what? 5 lakh. Tax rate is, then एक दो स्लैब और लेते हैं, बस हो गया. 5 lakh 1 to infinity, tax rate is 30%. ये हम फाइनेंस मिनिस्टर अभी हमने बना दिया ऐसे. Right? I want to calculate a tax, very basic. Then you can calculate tax, surcharge, education cess. There are different ways of doing it, but I want to explain you nested if. So what I want to say, if income, somewhere you should type the income of the person. ये slabs है और ये क्या है, tax rate है. You can type the slabs manually. So I want to just type income of a person here. Income. Let's say income is 3,56,000. What must happen? He must get tax at the rate of 5% only on the income above 2,50,000. Am I right? Now I want to calculate tax. You can do it with the if formula, or you can make a table. You can say how much is covered within here, how much is covered within that. There are ways and means. Now let me put a if formula. If मुझे क्या condition पूछना है पहले? Is this less than 2,50,000? Less than equal to भी type कर सकते हो आप. Excel के अंदर operator रहता है. You'll have to find out what is the correct operator for it. So if you don't know, let's say operator. Let's say for example I don't know. What I'll do? I'll go to Google. How to type less than equal to in Google Sheet in Excel. So
This is operators. Greater than is this, greater than equal to is this, less than is this, and less than equal to is this. So you can type the operator. If this is less than equal to 2,50,000, value if true, if it is true, what should be the tax? 0. It is not a text, it is a number. Text should be in inverted comma. If it is false, क्या करना चाहिए? Then you should ask another condition, because it may be above, it may be between 2,50,000 to 5 lakh, it may be above 5 lakh to 10 lakh, or 10 lakh to 20 lakh, whatever the slabs are there. I am not interested in knowing. Let us assume if it is greater, I want to tax at the rate of this into how much? 10%. Now I am not teaching nested if, just a second. क्या किया उसने? 35,600. एक ही कंडीशन लगाया ना. मैंने क्या कंडीशन पूछा? Is F5 less than equal to 2,50,000? If yes, if it is true, what should be the answer? 0. That is correct. But if it is false, you cannot apply 10% straight away. If it is a false, you have to check, is it between 2,50,000 to 5 lakh? So now this is what I am going to delete. Now value if false, false के जगह में मैं और एक if लगाऊंगा. This is called the nested if. You can apply as many ifs as you want, and when you go down to the real data, you will go mad with this. So if I want to apply, what is if? This income is less than equal to 5 lakh. Value of true. अब ये true किसके लिए? Second if के लिए. मेरा पहला if क्या था? Is it less than equal to 2,50,000? If it is true, it is 0. But if it is not true, first if is not true, then enter into the second if. और second if क्या पूछ रहा है तुमको? Is it less than equal to 5 lakh? If true, what should be the tax rate? 5%. But 5% of only 356 minus 2,50,000 into 5%. Did you observe? ये value of true लगा दिया मैंने. Value if it is true हो गया, कॉमा डाल दिया. Value if it is false. कौन सा false? Second if false है तो क्या होगा? Second if false है तो next slab check करना है. अभी next slab अपना direct open रख दिया मैंने. कितना %? 30%. 5 हो गया यार. IQ level ही नहीं है यार तुम्हारा digest करने का. 30% डेला देना. Let me assume मैं एक slab करा दिया 5 लाख से 10 लाख तक 20% का. तो value if it is false, मेरे को और एक if लगाना पड़ेगा. If this is less than equal to 10 lakh. If it is true, which true? This last wala. Then the tax should be at the rate of this minus 5 lakh, which is my previous slab. On that, I should charge at the rate of 10%. And if it is false, directly charge a tax at the rate of 30%. 30% on what? This excess. Sorry, this F5 पे क्लिक किया ना मैंने. F5 minus what? मैं कहाँ तक आया था? 10 लाख तक आया था. 10 लाख हो गया ना? इसके ऊपर कितना %? एक ज़्यादा जीरो लगाएगा. ठीक है, रेक्टिफाई करेंगे यार. 2 मिनट रुको. वैल्यू फॉल्स आ गया. अभी टैक्स उसने कुछ तो घटिया तरीके से किया है. बोलता हूँ परफेक्ट करेंगे. अभी देखो जीरो कहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगाया? इधर एक जीरो लगाया ना एक्स्ट्रा. 10 लाख. हाँ, मैंने क्या स्लैब्स किए? 5 लाख x से लेके 10 लाख. कितना % टैक्स लगाया मैंने? 10%. अबाउ 10 lakhs I took how much %? 30%. You can apply as many ifs as you want. Now try to interpret this. This is, you're gonna go mad. What is the first condition? First if चालू हो गया ना इधर. If F5 means what? Income. But अभी आप बोलते हो सर ये F5 इंटरप्रेट करने को मुझे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है. तो हर बार सोचना पड़ता है F5 क्या है. तो what there is Excel has a one wonderful feature which you can use called the named ranges. F5 जो है ना, you can define F5 as, यहाँ पे डेटा के अंदर डिफाइन रहता है कहीं तो, और you can just search define name. So you can say name should be income. In the workbook, whenever F5 is there, you can refer F5 as income. I can click on OK. Did you observe? ये जो सेल है उसका नाम चेंज हो गया. F5 नहीं है उधर, income है. So what can I do?
in the formulas I can type if income is less than equal to 5 lakh फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी टाइप कर देना यार. वैल्यू ऑफ ट्रू 2 रुपया, वैल्यू ऑफ फॉल्स 3 रुपया. बट एडवांटेज क्या हुआ, आई डोंट हैव टू राइट द वर्ड FI every time. I write income. This is logical ranges. So if you can create such names, you can do the automation of this also. Like if you have data in a row by column structure, you can say cell, intersection of row and column is a cell. सेल का नाम जो है ना वो ऊपर का जो रो का टाइटल होगा वो होगा, या कॉलम का जो टाइटल है वो रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. एंड इन द फॉर्मुलाज यू कैन यूज व्हाट, हियर इंस्टेड ऑफ FI आई कैन यूज इनकम वर्ड. फिर आप बोलेगे सर कैसे सर, अभी आपको इतना सारा चेंज करते बैठना पड़ेगा. आई विल नॉट चेंज, आई विल डू Ctrl+H डायरेक्टली. Ctrl+H, फाइंड एंड रिप्लेस. तो मैं बोलता हूँ फाइंड व्हाट FI, रिप्लेस विथ इनकम, बट लुक इन व्हाट, वेयर टू लुक इन फॉर्मुलाज, और लुक इन वैल्यूज भी होता है. राइट नाउ इट्स जस्ट अ सेल इज फॉर्मूला. मैं बोलता हूँ रिप्लेस ऑल. वी मेड 6 रिप्लेसमेंट, डन. अब इंटरप्रिटेशन आसान बन गया. तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ, अब देखो आसान, दिस इज लाइक अ नेचुरल लैंग्वेज. ये एक्सेल के अंदर स्टिल बहुत सारा टेक्निकल है. एज यू गो टुवर्ड्स अ पाइथन एंड टैब्ल्यू, यू विल गो मोर एंड मोर टुवर्ड्स अ नेचुरल लैंग्वेज ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो व्हाट डिड आई से, देखो मैं उसके इफ के अंदर मैं आगे गया. इफ इनकम इज लेस देन इक्वल टू 2,50,000, पहला इफ चल रहा है. इफ इट इज ट्रू, आंसर इज 0 टैक्स लगाना है. बट इफ इट इज नॉट ट्रू, डोंट पुट द आंसर, अप्लाई अनदर इफ. अनदर इफ लगा दिया मैंने. क्या अनदर इफ लगा, इफ इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख विच इज नेक्स्ट स्लैब, देन इफ इट इज ट्रू. इफ इट इज ट्रू मतलब पहला ऑलरेडी फॉल्स आ चुका है और सेकंड ट्रू आ गया. पहला फॉल्स मतलब वो 2.5 लाख से ज्यादा है, और दूसरा फॉल्स मतलब 5 लाख से कम है. तो टैक्स क्या लगाना चाहिए, 5%. बट 5% ऑफ एक्सेस अबाउट 2,50,000. तो इनकम माइनस 2,50,000 इंटू 5%, है ना. नाउ आई नो दिस इज नॉट द बेस्ट. ये टैक्स डायरेक्ट कैलकुलेट करने के लिए और भी फॉर्मूलाज है. यू कैन पुट द डेटा इन अ स्ट्रक्चर, बट आपको एक जगह पे एक सेल के अंदर फॉर्मूला लगाना है. बहुत बार ऐसे जरूरत होता है जब आप शीट्स डेवलप करते हो ना, when you do the financial modeling, you need that. So learn the formula. This is called a nested if. तो 5% लगाया मैंने टैक्स. If it is true, if it is false, second if false आ गया. ये कंडीशन क्या था, फर्स्ट इफ लगा दिया मैंने, वो ट्रू है तो 0 लगा. फर्स्ट इफ फॉल्स है तो क्या लगा, सेकंड इफ लगा. सेकंड इफ ट्रू आ गया तो ये आंसर लगा. सेकंड इफ फॉल्स आ गया तो थर्ड इफ लगा. थर्ड इफ में मैंने क्या बोला, इज इनकम लेस देन 10 लाख. हाँ, तो क्या कर, 5 लाख के ऊपर का जो टैक्स है उसके ऊपर कितना लगा, 10%. और अगर फॉल्स आ गया थर्ड इफ तो 10 लाख के ऊपर है, मतलब डायरेक्ट कितना परसेंट लगा, 30% लगा. और मैंने कितने इफ लगाए थे, 3 इफ लगाए थे. उन तीनों को क्लोज करने के लिए मैंने 3 ब्रैकेट लिखे, तो क्लोज हो गया. अब देखो परफेक्ट तुम्हारा टैक्स आते रहेगा. कितना है यहाँ पर, 10 लाख है ना, ये एग्जाम्पल है. अब देखो यहाँ पर 4 लाख नहीं करता. Okay, right now it is 5,300. How? Take on a calculator. 356 minus 2,50,000 into 5%. 5,300 हो रहे. परफेक्ट. मैं 550 करता हूं. 550 किया तो क्या होगा, ऑन 2,50,000 5% तो लगेगा ही लगेगा. दैट इज 6250 प्लस, ज्यादा लगाएगा कुछ, हाँ लैब में मैंने मिस्टेक किया था. अच्छा मैं आई हैव मेड अ मिस्टेक हियर. एक जगह पे मैंने कही तो 1 लाख टाइप किया है, लैब मैंने गलत टाइप किया. 1 0 दिखता नहीं रहा है. 10 लाख और नीचे भी क्या है, 1 0 लगाने का ना, 10 लाख. तो 5,50,000. उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो 2.5 लाख है इसके ऊपर 5% लगेगा ना. 2.5 लाख के ऊपर 5% लगाओ. अरे कितना आता है, 12,000. लेकिन अपना टैक्स किधर गलत गया, अभी मैंने रेट किधर तो गलत लगाया होगा. मैंने कुछ तो गड़बड़ की है. 1 सेकंड रुकने दो, मेरे को चेक करने दो. नंबर ऑफ डिजिट्स दिखता नहीं एक तो मेरे को.
income less than 5 lakh, income if it is less than equal to 5 lakh, then excess के ऊपर 5% लगाने का, else if income is less than equal to 10 lakh, मैंने क्या गलत लिखा है? एक स्लैब ही नहीं लिया क्या मैंने? इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख, हाँ इफ इट इज ट्रू, इनकम माइनस 2.5 लाख, उसके ऊपर 5% है, ठीक है। एक रो एक्स्ट्रा लगाया गया मैंने, ₹5 लाख के ऊपर, एक मिनट, ये 5,000 लग रहा है ना? 5,000 कैसे लग रहा है? 50,000 पे 10% लग रहा है। हाँ अच्छा, उधर हाँ प्लस करना बाकी है, ये प्लस नहीं किया मैंने यहां पर क्या एक कंडीशन भूल गए ना रे। सी इफ इट इज इनकम इज लेस देन 5 लाख, देन एक्सेस इनकम के ऊपर 5% लगाओ, ये करेक्ट है। इफ इट इज लेस देन 10 लाख, देन इनकम का डिफरेंस इंटू 10% प्लस, प्लस यहां पे करना पड़ेगा ना, प्लस तुम्हारा 5 लाख के 2.5 लाख के ऊपर 5%, कितना आता है? 12,500 लगाना ही पड़ेगा, वो प्लस लिखना भूल गया मैं, और यहां पर भी प्लस आएगा, तो वो तुम्हारा 5 लाख तक का जितना टैक्स है, 1,12,500 इज अ टैक्स अप टू दैट लेवल, तो प्लस इज गॉन। अब देखो 17,500 आ गया, कैसे? 5 लाख तक का टैक्स आया प्लस एक्सेस। अभी मैं यहां पर इनकम तुम्हारा 8 लाख पे लेके जाता हूं, 8 लाख पे लेके गया तो क्या होगा? इधर का टैक्स 0 आ गया, ये 2.5 लाख के ऊपर 12,500 आ गया, और यहां पे 3 लाख आ गया इस स्लैब में, 3 लाख के ऊपर 10% मतलब 30,000, तो टोटल टैक्स आना चाहिए तुम्हारा 42,500। आ गया क्या 42,500? लेट से मैं 11 लाख करता हूं, 1,42,500। कैसे 1,42,500? ये पूरा स्लैब पे लगेगा ना, ये पूरे स्लैब पे कितना लगेगा? 50,000 लगेगा, और ऊपर के अमाउंट के ऊपर 30,000 लगेगा। वन लाख फॉर्मूला में मैंने कितना ऐड किया? 1,12,500 नहीं है, वो 62,500 है, इधर मिस्टेक किया है, 62,500 मैच हो गया। सो प्लस का अमाउंट किसी ने तो गलत बोला था, 1,12,000, उसने एक्चुअल के हिसाब से शायद बोला है, वो इतना याद रट्टा मार के इतना याद रखे ना बच्चों ने। सो तुमने रियल लाइफ का बोला, रे मैं ये एग्जांपल रियल लाइफ का नहीं लिया है, मैंने एग्जांपल हाइपोथेटिकल लिया, तो मैंने तुमको क्या एक्सप्लेन किया? इफ एक्सप्लेन किया, नेस्टेड इफ एक्सप्लेन किया, मल्टीपल इफ्स, ये बहुत बेसिक है। अगर आपको ये एडवांस लगा होगा तो बिल्कुल नहीं, इससे एडवांस वर्जन आता है मल्टीपल, मतलब कंडीशंस। अभी तो मैं एक ही कंडीशन लगा रहा हूं ना, और मल्टीपल कंडीशंस के लिए ऐसे मुझे कंडीशंस लगाते जाने पड़ रहे हैं। आई वांट, लेट अस से आई हैव अ डेटा, आई एम गिविंग यू कि कैसे एग्जांपल, 5 मिनट लगेगा और या थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको जाना है छोड़ के जाओ। लुक एट दिस, आई से आई हैव सेल्स डेटा हियर, region, product, and amount. We'll go mad, huh? Region, north, west, south, again north, again south, product A, B, C, A. अमाउंट्स कुछ तो टाइप करता हूँ, just concentrate, you'll go mad. I want again south and B. I have data like this. Let's say there can be millions of rows, there can be billions of columns. Doesn't make any difference. I want sum of cells for north region for product A. Now there can be multiple entries of north and product A.
There are multiple ways of getting this answer, but different situations will require you to use different formulas. That's why you should learn. You can simply create a pivot table and get the answer, but I don't want you to understand pivot table, because there are some situations where you don't want a pivot. You want formula. So what I want cells of region में यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ नॉर्थ, एंड मैं यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप करना चाहता हूँ ए, और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे सेल्स चाहिए. Other day I explained you index and match, but sometimes you can use, if the data is like this, you can use sum if. Sum if मतलब बोलता है sum if अगर यूज किया तुमने तो एक ही कंडीशन के ऊपर सम दे देगा. It will give you sum only based on what? One condition. But if you want two conditions, like region should be north and product should be A, and then give me the total. If you want more than one condition, let's say I want only one condition right now. Sum if range. रेंज मतलब आपका क्राइटेरिया जो है उसका रेंज. मेरे को नॉर्थ रीजन का टोटल चाहिए सिर्फ. ये आ गया रेंज. क्राइटेरिया शुड बी नॉर्थ एंड सम रेंज शुड बी दिस. ठीक है, हिट एंटर. आ गया नॉर्थ का टोटल आ गया. इफ आई चेंज नॉर्थ बाय साउथ, साउथ का टोटल आ गया. बट दिस इज राइट नाउ आई यूज ओनली वन क्राइटेरिया. सो व्हाट आर द सम इफ आई हैव यूज्ड? व्हाट इज सम इफ? रेंज. रेंज कॉलम में आपका जिस जो क्राइटेरिया आपको अप्लाई करना है वो रेंज कॉलम में रहना चाहिए. जो क्राइटेरिया है वो G2 आ गया, एंड देन सम रेंज. सम रेंज मस्ट बी एग्जैक्टली वर्टिकल टू द रेंज. आई वांट नाउ two conditions to be fulfilled. What are the two conditions? I want a sum if product is A. You can use sum ifs. क्या करना है आपको? SUMIFS. सम रेंज. किस चीज का सम चाहिए? इस चीज का सम चाहिए. क्राइटेरिया नंबर 1, उसका रेंज कहां पर है? क्राइटेरिया 1 इज ये. वो क्राइटेरिया कहां पर है? इधर है. क्राइटेरिया 2 का रेंज यहां पर है. क्राइटेरिया 2 किधर है? इधर है. खत्म, आ गया. दिस इज साउथ एंड ए. आप ऐसे जितने चाहे उतने क्राइटेरिया लिख सकते हो. एडवांटेज इज यू चेंज इज साउथ A to B. सम चेंज हो गया. Z करता हूं मैं 0. Z है ही नहीं उधर. Z अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं साउथ के अंदर, आ जाएगा टोटल. Depending on the purpose, you will get to know the data. Now this like sum if. There are multiple conditions. तुमको सम नहीं चाहिए? सम इफ के जैसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है. You can just do count if. आपको कभी कभी काउंट लगता है कितने इनवॉइसेस बने, कितना क्वांटिटी, कितने विजिटर्स आए थे. यू कैन यूज काउंट इफ एस. काउंट इफ एस. बाकी सब कुछ क्या रखने का, सब कुछ सेम रहता है. काउंट इफ का मैंने एक क्राइटेरिया कुछ तो एक्स्ट्रा दिया. यू कैन टाइप इट अगेन. count if S. Criteria range 1. Criteria range 1. This is my criteria. हाँ, उसको सम का नहीं चाहिए था ना. एंड क्राइटेरिया 1 ये आ गया. समझा गया तुमको? क्राइटेरिया रेंज 2. ओ माय मिस्टेक. आई वांट रीजन साउथ. क्राइटेरिया रेंज 2 प्रोडक्ट. ये क्राइटेरिया आ गया. काउंट 1. एक ही ऑर्डर मिला है साउथ में ए प्रोडक्ट का. आपको ऐसा काउंट नहीं चाहिए, आपको एवरेज चाहिए. यू कैन यूज एवरेज. जस्ट एवरेज. एवरेज इफ भी कर सकते हो. एक कंडीशन, आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए, एवरेज इफ्स. ऐसा काउंट कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, सम कर सकते हो. एंड देन यू कैन यूज statistical functions also can be performed using this. For statistical functions you require add-in to be enabled. तो एवरेज इफ चाहिए मुझे. सम एवरेज रेंज. किस चीज का एवरेज चाहिए? इस चीज का एवरेज चाहिए मेरे को. क्राइटेरिया 1 कहां पर है? रीजन का क्राइटेरिया इधर है. देन क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 ये आ गया मेरा प्रोडक्ट. वो कहां पर है? यहां पर है. क्राइटेरिया खत्म. एवरेज दे देगा तुमको. एक ही है इसलिए एवरेज एक ही दे रहा है. साउथ में बी का एवरेज देखो, अभी एवरेज फिगर आएगा. बी का एवरेज उसने बराबर ले लिया ना, 4545 एंड दिस. सो आई वांट टू नो व्हाट इज द एवरेज ऑर्डर वैल्यू. You are analyzing the sales of Zomato. That's your auditor, or you are
data scientist working there, or you're trying to dig into the data. What is the average order value of your sales? What is the number of orders that come from a particular pin code? So I want to know like veg orders, non-veg orders में average order value कितना है, gender order करने वाला क्या है, age group क्या है. So I want a table, order value, average order value by different age groups. So I have a table, age group A, age group B. You can define A as let's say 12 to 15. Allowed नहीं करेगा बच्चों को मेरे हिसाब से. 18 to 25. Age groups है. Age group है. Average order value क्या है? Age group है. Veg food, non-veg food, Chinese food, different types of cuisines I put up. I want to know which age group orders what kind of cuisine. You can deep dive into the data. Once you start using these basic things, there are way better tools. These are not the best tools that are available. There are better tools available, but to understand those better tools, you have to start with the basic fundamentals and then deep dive into the data. If you get the order database, and आप बोलेंगे सर लेकिन वो डेटाबेस बहुत बढ़िया रहेगा, मतलब बहुत बड़ा रह सकता है. I can analyze the data of let's say 50 crore rows, 100 crore rows, 1000 crore rows, whatever the number of rows or whatever number of transactions are there in Microsoft Excel without touching the actual database. That is a power. Microsoft has created. The data just needs to reside on the particular server. I can pull the data from the other server. I just need to get the credentials of that particular server, user ID and password, and I can put the data. There is a get and transform data. I can get the data from database, SQL database, Microsoft Access database, or I can get it from the Microsoft Azure server. I can get the data from other sources. There are a lot of sources. I can combine the queries, or I can write the query completely. Online services right now, I am not connected to any service. So you can connect to Amazon server. You can connect to any damn server in the whole world, and you can get the data. That data resides there. You can perform any kind of analytics that you want out here. With the look and feel of Excel, Microsoft has added tools on this on top of that. But आपको पहले basic tools के साथ interest create करना पड़ेगा analytics के लिए, and then you can explore on the basis of it. Other things we discuss tomorrow.